Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Yeah. Okay. So yesterday we discussed about your safeties and all, right? Basically, Yes, sir. first was on your safeties. So just add one more safety there about unloader. Huh? We have unloader also. So just write unloader also there. Okay. We will discuss unloader later on. Okay. Okay, sir. So the सर basic वो diagram is yes, bolo. सर वो टीवी में जो सुपर हीट एडजस्टमेंट था सर वो आपने नहीं बताया अभी, शायद आप बाद में बताओगे। नहीं बताया था ना सुपर हीट एडजस्टमेंट. Okay. Suppose right now my EV is adjusted so that means my spring tension has been adjusted in such a way that I am getting a 5 degree of superheat here. Okay. That means suppose यहाँ पे if my यस सर। temperature is -15 for example, I will get at least here how much? -10. That is 5 degree of अंडरस्टैंड, superheat. यस, हाँ सर, हाँ। Yeah. यस सर, यस। But but now if I am going to screw this bolt up, what will happen to my spring tension? It will increase. इट विल इंक्रीज। It will give more force na. P3 force will increase or not if I screw हाँ it जी up. सर। Okay. हाँ जी। So if the P3 force is increasing, I will need P1 force much more यस सर। to open the valve. यस That सर। means I am increasing the degree of superheat na. जब यहाँ पे temperature will be more, then only it will be exerting more pressure, तभी मोर प्रेशर, यस सर। right? And that's why your degree of superheat is going to change afterwards. Is it clear? ओके सर। That means क्लियर more सर। of the coil of your evaporator will be acting as a superheater. Okay. And when it is ओके सर। going up, you have applied more P3 force. That means this opening area also is reduced now. Less refrigerant will be going. Don't you think? So if हाँ। less refrigerant is हाँ सर, going, मतलब आपका ज्यादा area will be that evaporator coil and the more area will be for your superheater. Lesser area for evaporator, more area for the superheater coil, right? यस सर। Is it understood by adjusting the spring tension how your superheat is changing? सर अगर जैसे एडजस्ट करेंगे तो फिर मतलब हमें P1 ज्यादा चाहिए P प्रेशर। ज्यादा तो चाहिए, उसके लिए agreed. हमें मतलब ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना पड़ेगा। ऐसा है नहीं क्या? नहीं 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 देखो, if यही कंफ्यूज P3 हो गया has था सर। increased, okay, if the P3 has increased, this P3 has increased, यहाँ पे spring pressure has increased, okay, because you have जी। screwed it up, okay, so it will exert more pressure on my needle valve, so needle valve will move up. यस सर। That means my less refrigerant will be able to flow from here. यस सर। Okay, when less refrigerant is flowing from here, suppose before my superheat coil was starting from here, now it will start from here because less refrigerant will completely change into vapors in this much area itself now. हाँ सर। I have more area for my superheat, isn't it? सुपर। So this यस सर। temperature, what difference I was getting before 5 degrees, now it will be more. Agreed? यस सर। And because of this more degree, I will be having more pressure because मेरे को ज्यादा pressure चाहिए रहेगा ना. If I'm going to, I told you P1 should be greater than P2 plus P2 P3. plus P3। यस If सर। you have increased P3, obviously you will be needing more P1 in order to open the valve. यस सर। Okay, so you understood how the degree of superheat is getting changed by adjusting the spring tension. मतलब सर लेस रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो पर डिग्री ऑफ सुपर हीट बढ़ेगा, जिससे आउटलेट एवापोरेटर के आउटलेट पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा नहीं नहीं जो नहीं 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 डायरेक्टली। नहीं. Don't say less refrigerant flow करेगा. You have changed the spring tension. Okay. After that, it ओके। is changing less refrigerant. Okay. ओके सो After मींस you have अकॉर्डिंगली दिस। adjusted, then according to the previous values, now less refrigerant will be flowing. Okay. ओके सर, मींस अकॉर्डिंगली एट द एवापोरेटर आउटलेट अच्छा, रिलेटिवली इट विल अगर बी। कंफ्यूजिंग लग रहा है, इतना याद रखो, P1 should be greater than P2 plus P3. If you are increasing P3, P1 has to correspondingly increase in order to open the valve. That हाँ means पर I सर need उसके more लिए तो। temperature over here. हाँ जी, हाँ जी। That means more heat exchange should happen over here. Superheat का. यस। यस सर। Now you understood? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक. सर सुपर हीट का काम तो यही है ना कि जो अपना Main जरा purpose, सा भी लिक्विड है liquid should not उसको हंड्रेड return back. परसेंट वेपर।
100% वेपर में आना चाहिए ना सर? 100% vapor, liquid should not return back. That is the main purpose of your giving the superheat part. Okay. And सर in the ओके, थैंक यू। condenser, we talked about subcooling. वहां पे क्या सब था? कूलिंग सब 100% liquid रहना चाहिए. विप, That's why, right? 100%। यस, यस, Okay. थैंक यू। सर So basic, yes, सर अगर जैसे कि हम आपने बताया कि एक हमारा एक सेकंड टी ये ओरिफिस प्लेट से निकलेगा 4 बार हो जाएगा और -25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस टाइम पे 5 डिग्री गैस रहेगा एंड yes, 95% लिक्विड, राइट? yes. एंड हमको Generally, चाहिए it is like that. Okay. हाँ, Generally, it is like that. ठीक है। किसी किसी में आपको 10 डिग्रीज गैस एंड 90 डिग्री 90% लिक्विड भी हो सकता है. ओके. ओके, बट जब सुपर हीट की बात करते हैं, देन सुपर यस. हीट द चेंज इन टेम्परेचर, जब मतलब कि वो सैचुरेशन पॉइंट से कितना ज्यादा होगा? After 100% vapors has been formed, after that, यस when सर, it is flowing from your refrigeration coil, यस सर। suppose I have a coil. Let me draw it over here. Okay, this is my coil. Okay, of my evaporator. Okay, and this is the inlet from where 95% liquid was coming and 5% gas is coming. That is, it is after TEV. यस सर। Okay. Now this 95% liquid, it will go and flow over this surface and corresponding आपकी air flow कर रही है यहाँ पे because of the fan. यस सर। So this 95% liquid will be able to convert here itself. After that, whatever remaining coil is there, now at this state, my state has become 100% vapors in the evaporator coil. It has already done so much heat exchange that it has been changed to vapors. Okay, boil hoga, isn't it? यस सर। Now, whatever remaining part is remaining of my evaporator coil, that will also do heat exchange also. यहाँ पे भी heat exchange होगा ना? यस सर। Okay, it is still less than your room temperatures. Okay, this, but we consider this as superheat because इट इज अबव here, द सैचुरेशन टेम्परेचर। no, don't say like that, saturation temperature. Okay, but just ये बोलो that after 100% vapors has been liquid has been changed to 100% vapor, whatever coil is now doing heat exchange, that will act as a superheat. मतलब आपका यहीं पे हमको इतना this much was enough for me. 100% vapors already has become, but I am making sure that कोई भी like there is no possibility that liquid go should go back. That is why I've given a longer coil so that some part of it can act as a superheat. Is it clear? सर मेरा डाउट ये था कि सुपर हीट की जब डिफाइन करते हैं हम लोग, तो वो सैचुरेशन पॉइंट से जितना भी डिग्री Yes, अबव होगा, राइट? correct. और सैचुरेशन पॉइंट को हम लोग एक तरह से ये भी डिफाइन करते हैं कि जब फेस चेंज होगा। Phase change होगा. हाँ, Yes, yes, ठीक you है। can say. तो इस टाइम पे हमारा है 95% लिक्विड एंड 5% गैस, Yes, ठीक है। तो और इस पॉइंट पे हमारा है 100% वेपर, राइट? correct. तो इसके ऊपर जितना भी होगा वो सुपर हीट होगा, Yes, ठीक है। अब मेरा कंसर्न ये था सर कि 95% लिक्विड है और 5% गैस है, ठीक है। तो जब yes. फेस चेंज उस टाइम पे यहाँ पे तो हो चुका है, उसके बाद जितना होगा और इस टाइम पे हमारा ये टेम्परेचर भी जो क्या है, इस टाइम पे हमारा टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Mm-hmm. इस टाइम पे 95% जो लिक्विड है उधर हमारा कितना है, -25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। और Correct. एट द आउटलेट ऑफ इवापोरेटर वी वांट 5% ऑफ सुपर हीट, राइट? तो Yes, तो -25 सपोज लेते हैं, -25 इधर है, तो आउटलेट ऑफ इवापोरेटर पे हमको चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस, yes. राइट? Okay. तो जब हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर जो सुपर हीट का डेफिनेशन जो होता है वो हमारा फेस चेंज के बाद का है, तो इधर तो लिक्विड है। तो यहाँ पे आपका -25 है. That is your, that is what? Saturation temperature. Now -20 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? वो तो ऊपर आएगा, पर That is superheat ना? हाँ, पर ये जो -25 डिग्री सेल्सियस आया, तो ये जो टेम्परेचर, ये 95% लिक्विड का है या 5% गैस का है?
दिस इज अबाउट द कंप्लीट पार्ट के लिए, ठीक है। हाँ, कंप्लीट अच्छा। पार्ट का ही टेम्परेचर इज विल बी -25. This 5% gas has taken the heat from this 95% remaining liquid, हाँ, and the complete system has become temperature of -25. ठीक है। यस सर, वो तो मैं समझ गया, पर लेकिन जब डिफाइन करते हैं ना तो वो हमारा फेस चेंज के बाद होगा ना, तो फिर लिक्विड में, लिक्विड के बाद का ही होगा ना, तो फिर जो 5 डिग्री गैस है उसका टेम्परेचर फिर कैसे होगा? ओके, इसको बाद में लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। वैसे नहीं तो फिर हम रह जाएंगे यहीं पे, ठीक है। इसको ओके सर। प्लीज इरेज कर दो। यस सर। एंड डोंट ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो थिंग्स को, अदरवाइज और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यस सर। आई विल क्लियर योर डाउट, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। Okay. So right now we have discussed slightly some things about your compressor. We still have to see the oil separator construction part. Okay. Somewhat we have to discuss about your condenser, but I've told you there is subcooling in it, isn't it? Then you have the यस सर। filter dryer. Iska bhi construction we have to see. Okay. Solenoid valve operation, you know now why the solenoid valve, how the solenoid valve operates. It is operating through a यस सर। thermostat, right? थर्मोस्टेट। And यस। thermostat का basic function है, it is to सेंस द टेम्परेचर। yes, it is to open your solenoid valve or to close the solenoid valve according to the temperature, right? And settings, यस सर। whatever you're changing, that you're changing in the thermostat itself. Is it clear? यस सर। Then we have discussed about the operation of your TEV, okay, how the TEV is working, and about evaporator also. We have discussed a lot about, okay. Now we will discuss about this back pressure valve, which is present over here in the wedge room. So if this is meat room, this is fish room, I have one wedge room over here, right? वेरी। यस सर। So why I have provided this valve over here? This is a spring loaded, non-return valve. That means nothing can come from here. Agreed? यस सर। Okay. Also, why it is known as back pressure valve? So this question has been asked so many times in your orals. यस सर। Okay. With the name, what does it mean? Back pressures. That means it is creating a pressure back onto the system. Agreed? यस सर। Okay. यस सर। Let me just make a simpler figure over here and explain you. Okay. So suppose this is my evaporator. Okay. This is my TEV. Okay. Sensing bulb. And I have a suppose a back pressure valve. Okay. So this back pressure valve, what it will do, it will create a back pressure onto the system. That यस सर। means it will keep my evaporator into a higher pressure region. यस सर। High pressure generate करेगा. Now what do I actually want by giving this back pressure valve? I want my wedge room. Wedge room का temperature कितना maintain रखते हैं? +5, 4-5 डिग्री। right? यस सर। 4 to 5 degrees Celsius we are maintaining. यस सर। यस सर। Okay, but in plus, right? यस सर। प्लस। Okay. Why not negative? Because it will create thermal shock on your what do you say, food. Okay. कंपोनेंट। फूड। लिविंग स्टॉक्स। Okay. So if I am giving back pressure here onto this coil, okay, in the evaporator, if this pressure is higher, don't you think the saturation temperature will also go up? Also, if I am creating a pressure over here, will it allow the refrigerant, more refrigerant to come in? नो सर। That means less refrigerant will come, less flashing up. यस सर। यस So सर। my saturation temperature will go up. If I'm यस able to सर। create a back pressure यस सर। onto the system, okay, if I'm able to create back pressure onto my system, then less amount P2 is increasing, na? I'll go back here into your TEV. So if यस सर। this pressure is more, I have created a back pressure into the system, so P2 will be more.
यस सर। Yes, sir. What will happen to my diaphragm? It will Needle valve It will it will will increase. lift lift up my upward. needle valve. Will it lift my Yes, needle valve? yes, sir. Yes, sir. That means less refrigerant will be coming. Yes, If less refrigerant is coming, less flashing up. yes. Less flashing up. That means this temperature will Will be be higher. increased. Yes. प्लस तो नहीं होता, 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जीरो में कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। So it can be -1 also. It can be depending upon how the adjustment has been done. Okay, I am taking an example. Suppose plus 0 degree, 0 degree Celsius. Okay, and obviously the pressure is more. Maybe I can say 6 bar pressure. Is it clear? Yes, sir. Because P2 is increasing, my needle valve will come up. Less refrigerant. I don't want too much refrigerant to come into my evaporator. Do I want too much refrigerant to come into my evaporator? I don't want too much cooling also, right? यस सर। No. So उसके लिए मुझे क्या करना है? I have to give this less amount of refrigerant. Okay, how I can give less amount of refrigerant? By pushing my needle valve up to the orifice. If my opening between my orifice and my needle valve reduces, then less amount of refrigerant will be coming, less amount of flashing up will be happening, and that's why your saturation temperature will also go up. Do you agree? यस सर। Okay. Second purpose, this is one of the thing. Second is, now suppose my compressor has started or the system has started. Okay. Do I need same amount of refrigerant flowing through number A, E, and C? नो सर, नो डिपेंड्स सर। अपॉन रूम टेम्परेचर। ठीक है, I want A and B to have more refrigerant flowing. Meat room, fish room में I want more refrigerant to flow because I want to maintain it at much lesser temperature, -20, -18 degree Celsius. सैचुरेशन टेम्परेचर लो हो जाएगा सर तो उनका। Yes. So I यस want more amount of refrigerant to flow into the system. How I can do it? By creating a back pressure. Mm. If Yes, sir. less amount of refrigerant is able to flow from my TEV, that means all the refrigerant will कहाँ जाएगा वो? ए ए एंड Into बी। एंड my बी। system. Into the A and B systems, right? That is हाँ my sir. meat room and fish room systems. So do you understand why a back pressure valve is provided? बोलो. Yes, sir. Okay. You want सर एक बार थोड़ा और बता दीजिए सर एक बार। yes. Back सर pressure valve, इसमें what it डाउट मेरे is? को ये है हाँ, कि ए और बी तो कैपेबल हैं खुद के, मतलब टीवी जो है वो खुद कैपेबल है मीटू में फिश रूम के लिए, तो उसको सी की जरूरत क्यों पड़ रही है सी वेज रूम की? सिस्टम तो कॉमन है ना, हाँ रेफ्रिजरेंट भी सर। कॉमन है, ठीक है। यस सर। I want maximum refrigerant to go to my these two lines. Do you यस agree? सर। यस To सर। cool my meat room and fish room. I want यस सर। on very less amount of refrigerant over here. यस सर। How will I do it? If I create back pressure onto my system, okay, so it will close my solenoid valve, sorry, TEV accordingly. Less opening रखेगा, P2 pressure is increasing by creating back pressure. Agreed? यस सर। Okay, if it is creating back pressure and P2, I am having less amount of refrigerant and I'm preventing this refrigerant to flow also. So that means my refrigerant का temperature will be at higher part, higher रहेगा, यस सर। यस सर। right? And less refrigerant अगर यहाँ पे जा रहा है तो maximum refrigerant will where it will be going? बी These एंड two सी। lines, and that is बी what I एंड want. यस सर। Also, I have done two things I have achieved here. First thing is saturation temperature of my veg room has been obviously increased, right? यस सर। Saturation temperature of my veg room has obviously increased, right? Also, have prevented too much refrigerant flow into my veg room. I want maximum refrigerant to go to my meat room and fish room, not to my veg room, right? यस सर। Okay, so these अंडरस्टूड। two are the purposes. Is it clear now? यस सर। This question has सर been asked a lot of times in your orals, okay? But you should be able to, देखो पढ़ तो आप लोगे बुक से कि बैक प्रेशर क्रिएट करने के लिए रहता है, ठीक है, ऑन टू द योर इवेपोरेटर, बट उससे हो क्या रहा है? सो डू यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है एक्चुअल में? सर लिखवा दीजिए थोड़ा। बट इफ आई एम गोइंग टू राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन ना, ये टॉपिक 10 दिन बाद भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। सर सो बस बैक इफ प्रेशर इट इज वाला थोड़ा पॉसिबल, लिखवा दीजिए इफ इट सर। इज पॉसिबल
या फिर मैं एक काम करूंगा, आई विल मेक सम नोट्स रिगार्डिंग दिस एंड आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन में एक बार गो थ्रू एंड जस्ट राइट इट डाउन ना। सी अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, अगर मैं हर चीज निकालना लिखवाना शुरू हुआ ना, देन हम कवर नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है? इज इट ओके विद यू गाइस? सर एक चीज, एक डाउट था सर, अगर ये P2 प्रेशर बढ़ेगा तो निडल ऊपर लिफ्ट होगा, तो जिससे हमारा फ्लैशिंग अप कम होगा, यस, तो और ऑल्सो लेस मतलब रेफ्रिजरेंट अपना, विल बी कमिंग। तो सर अभी लेस रेफ्रिजरेंट आया था, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था आपने कहा लेस रेफ्रिजरेंट आएगा, तो अभी वो प्रेशर एडजस्टमेंट सुपर हीट का कर पाएंगे, तो क्या उससे क्या रिलेशन है? मतलब मेरा कहने का मतलब है शॉर्ट में कि क्या सुपर हीट भी बढ़ेगा कैसे अगर लेस रेफ्रिजरेंट आएगा नहीं, तो? सुपर हीट इसका कोई इज लेना? इंटायरली डिपेंडिंग अपॉन योर स्प्रिंग प्रेशर। जब तक आप स्प्रिंग प्रेशर चेंज नहीं करोगे, आपका सुपर हीट चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? यहाँ पे ओके। वो सब मैटर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मेरा मेन पर्पस क्या है कि मेरे को अपने रूम का टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे, डू आई वांट -25 डिग्री सेल्सियस ऑफ रेफ्रिजरेंट टू फ्लो इनटू माय सिस्टम टू नो टू सर। ब्रिंग माय रूम टेम्परेचर टू +5? नो राइट। नो सर। मेरे को इतना ठंडा नहीं चाहिए, ठीक है? आपने, इफ यू हैव सीन योर फ्रिज, फ्रिज तो सबके घर में होगा, आप देखो यस उसमें, सर। to keep your fruits and vegetable there is a separate compartment given which is almost covered, यस सर। ठीक है? बॉटम में रहता है, राइट? हाँ जी, बॉटम में। प्लास्टिक का ट्रे रहेगा उसके अंदर, वो completely ऑलमोस्ट बंद रहता है, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट आइसोलेटेड, अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सिस्टम, राइट? हाँ जी, सो हाँ दैट जी। उसका टेम्परेचर विल ड्रॉप as less as compared to your other items, okay? Here I do not want -25 degrees Celsius to be my saturated temperature, I want much higher. So that's why if I create back pressure, less P2 pressure will increase, needle wall will go up, less amount of refrigerant will be coming. When less amount of refrigerant is coming, less amount of flash up will be there. This temperature will obviously go up, ओके प्लस ओके वन हो सर। सकता है, ठीक है? नाउ दिस +1 टेम्परेचर विल बी गोइंग ओवर हेयर, तो यहाँ पे आउटलेट में अगर 5 डिग्री सुपर हीट है तो कितना होगा? 6, सॉरी, हाँ, यस सर। ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? मतलब सर Yes. इसके इनलेट में अपना कम कम रेफ्रिजरेंट आएगा क्योंकि हमें कम कूलिंग की नीडेड है। पहला पॉइंट ये हो Obviously गया, और दूसरा ये हो गया। we do not want too much of refrigerant to flow into my veg room, ठीक है? I am not going to cool my meat room, fish room, veg room according to my meat room and fish, right? सर उसका सैचुरेटेड यस सर। टेम्परेचर अब कैसे दूसरा What is पॉइंट बढ़ ये this रहा कह है Mohit? रहे हैं कि हम तो चाहते हैं नोट्स मैक्सिमम मांगा था ना हमारा कोई, रेफ्रिजरेंट। तो उसके लिए भेज दिया मैं बैक प्रेशर को। Okay, okay. सर एक बार हाँ ये बोलो। सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है बता दीजिए ना, मतलब Saturation temperature what? कैसे बढ़ रहा है मतलब। कैसे बढ़ रहा है? If हाँ less मतलब एक बार amount of refrigerant is coming, that means less, what do you say, कूलिंग। less amount of flashing will be taking place. यस सर। जितना ज्यादा फ्लैशिंग अप होगा उतना टेम्परेचर कम होगा, राइट? मतलब फ्लैशिंग अब कम हो रहा है तो उससे सैचुरेशन टेम्परेचर यस। बढ़ जा रहा है। अगर कम रेफ्रिजरेंट आ रहा है, इट विल गो टू अ बिगर एरिया, ओके? सो ऑब्वियसली फ्लैशिंग अप विल बी लेस एज कंपेयर टू देयर मीट रूम एंड फिश रूम। दैट इज व्हाई वहां पे टेम्परेचर, आई हैव सी, आई हैव मेड अ एरो ओवर हियर एंड आई हैव रिटन 4 बाय -25, राइट? आई हैव नॉट रिटन ऑन दिस पार्ट, बट here it will be obviously not -25, okay? Your this thing will be higher, your saturation temperature will be higher, okay? ओके Is it सर clear? यस सर, सर फर्स्ट क्लास में मैंने डाउट पूछा था। इधर इधर देखो, इधर देखो, 20 बार 85 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स this is my saturation temperature, pressure and saturation pressure, temperature, यस सर। pressure and यस temperature। सर। तो यहाँ पे भी तो इंक्रीज हुआ ना, as your pressure has increased. Now I have created purposely my evaporator into a higher pressure region, right? By providing a back pressure valve, evaporator pressure will increase or not? So if यस सर। evaporator यस सर। pressure is increasing, what will happen to my saturation temperature? यू विल आल्सो इंक्रीज। इंक्रीज। It will also increase. यस Okay? सर। Is it understood now? यस सर।
All right. So can you guys will be able to tell what is back pressure valve, why it is provided and where it is provided? Okay, लोकेशन भी पूछेंगे वो आपसे कहाँ पे होता है. तो आउटलेट ऑफ योर इवेपोरेटर ऑफ द वेज evaporate. रूम. Bedroom. वेज रूम, ठीक है. इट इज अ स्प्रिंग लोडेड नॉन रिटर्न वॉल्व. इट विल नॉट अलाउ ऑल्सो फ्रॉम अदर रूम्स. द प्रेशर शुड नॉट कम ओवर हियर. Okay. Second purpose, the main purpose is to keep the evaporator at a much higher pressure. Temperature. If pressure is higher, your saturation temperature will be higher, and room will, what do you say, will be remaining little bit hotter as compared to your meat room and fish room. Okay. And obviously, the third, one more main reason is that my more refrigerant should flow to my meat room and fish room, and less amount of refrigerant should flow to my veg room. And I have explained you how it is helping by creating back pressure, how it is helping that mirror less amount of refrigerant should flow, isn't it? P2 pressure बढ़ रहा है, that terminology. Is it clear? Yes, sir. The Sir, back if, pressure station is outlet of the evaporator. What? ये रहा ना आउटलेट में ही है ना, on the return line. देखो, Yes. it is here ना, outlet of my evaporator, isn't it? Okay. So the pressure due to the back pressure valve, the Yes. pressure in the bedroom evaporator line will be higher, right, compared Correct. to meat room and fish room. Yes. So then, sir, after the spring return, after the back pressure valve, Yeah. even that time the pressure will be higher, no? Because they have Correct. to overcome the Comparatively. yes, sir. Yes. Yes. So then, won't the pressure come in the meat room and fish room का line? See, this will मतलब be ऐसा approximately, suppose अगर यहाँ पे 4 बार है तो यहाँ पे approximately 3.5 या 3 हो 3.5, सकता है. yes, You can yes, say sir. that यहाँ से back लग जाएगा, right? This Yes, is your sir. वैसा concern. पूछ रहा हूँ. But Yes, it will sir. not create any problems to this system because यहाँ पे obviously we want to create much lesser temperature. ठीक है? It will not hinder that operation to that extent. ठीक है? Is it Okay. clear? And Yes, sir. obviously this is, understand one point, that if it is 6 bar maintaining over here doesn't mean outlet में 6 बार जा रहा है. वो रोक रहा है तभी तो 6 बार है. That means ये pressure will be less as compared to these two pressures. Okay. If I name it 1 and 2, my number 3 pressure which is coming from my evaporator of my veg room after my back pressure valve will be lesser than these two, 1 and 2. So आपका फ्लो यहां से यहां होने के चांसेस हैं, यहां से यहां नहीं. ठीक है? बिकॉज इट इज प्रिवेंटिंग ना. सपोज करो दिस इज पाइप. I have kept this wall this much close. Okay. And here I have 6 bar. So I will be getting 6 bar over here. No. No, sir. अच्छा, okay, वैसा रहता है. हाँ, sir, Understood, ठीक है, समझा. Means Okay. it is like in normal operation, it is allowing some refrigerant to pass by while it is Yes. maintaining the 6 bar pressure as well. Correct. Okay. Is Okay, maintaining okay, a okay. back pressure here, but it is allowing some amount of refrigerant क्योंकि refrigerant तो continuously आ रहा है ना यहाँ से भी. Yes, sir, okay. Okay. हाँ, So this और जो pressure, नॉन रिटर्न पार्ट है उसका, that is तो मतलब अपना नॉर्मल नॉन रिटर्न वाल्व के जैसा ही है. It will yes, not that is allow preventing pressure यहाँ का also. flow वापस ना जाए. Right. That is preventing that. Okay. Yes, sir, yes, sir. Okay. सर इसका वैल्यूज बता सकते हैं किसको? सर? यहाँ पे हमारा जैसे कि 4 बार और -25 डिग्री नो सेल्सियस नो तक. वैल्यूज आर फिक्स्ड. हाँ, मैंने आपको ये -4 बार और 25 भी बोला है ना. दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी डिफरेंट टाइम. हाँ सर, एट वो जो एवरी डिफरेंट इस शिप टेम्परेचर. के अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ, इस शिप के अकॉर्डिंगली नो नो पूछ नो, रहा हूँ. शिप के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा. एट एवरी डिफरेंट टेम्परेचर दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी डिफरेंट. अच्छा, ओके बिकॉज सर. बिकॉज जैसे जैसे आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, व्हाट इज प्रेशर विल हैपनिंग बी टू माय नीडल वॉल? प्रेशर रिनोवल नीडल वॉल इज गोइंग ऊपर अप. क्लोजिंग, जाएगा, राइट? लेफ्ट या अपवर्ड. इट्स गोइंग अप अपवर्ड्स. या. सो उसके हिसाब से ये भी चेंज होता रहेगा, राइट? यस सर. Okay, so this is changing always. Okay, so that's why I cannot give you one value. ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए I have taken one instance. Is it clear? ओके सर. Okay, so hold on.
स्टिल उसमें भी सर 5 डिग्री ऑफ हमारा सुपर हीट होगा. I want other people to, speak up. Ashutosh, can you hear me? Ashutosh, Yes, sir. Yes, sir. why differential pressure lube cutout is provided? Sir, yesterday actually I didn't attend the class, sir, because I went for sister engagement. So Okay, today okay, I not able to understand. no problem. Laga lena. Ananya, you were there yesterday, right? Yes, sir. Why a differential pressure lube pressure cutout is provided? So that we can identify if the lube oil pump is not working, so that we can not let the bearings run without lube oil. Yes. Okay. Good. Then देखो अभी डर निकालो यहाँ पे बोलोगे तो डर निकलेगा. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट स्पीकिंग. संजय, संजय, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Okay. Tell me why I have not given a flywheel into my refrigeration compressor. Uh, sir, I forgot, sir. सर Uh, मैं आए सर. बोलो बोलो जिसको आता है. Sir, we have, sir, flywheel something that stores energy, sir. Like if any, due to any factor, like if any HP or LP cutoff triggers, so as the flywheel keep on rotating and the piston, as it is a piston arrangement, so the piston will keep on moving up and down. Yeah, So that means it the will plot not immediately stop your compressor, right? In stop. case of Yes, sir. emergency. Yes, emergency. So that's why we have not provided a flywheel, sir, so that it should trip on the sudden moment only itself, sir. Yes. Okay. So let us Sir, discuss some of your it includes differences. LP cutout only, na? Or HP Which, cutout? किसमें? Sir, flywheel वाला flywheel. Flywheel is for any safety, ना? वो तो सब common है ना? कोई भी safety Okay. trip is getting activated, your compressor should stop immediately. Okay. Okay. Flywheel Okay. normally stores the energy. Okay. And it will release the energy if suppose trip has happened. It will not allow for few seconds the compressor to stop. And in case water is there, what it will do? There are chances that damage can happen to your bearings and to your Piston. piston and all right. All right. So let us discuss some of the differences. Okay. In your RAC. Can you please repeat that differential pressure low oil pressure cutout? Sir, Okay. may I, sir? लास्ट में करें चलेगा. लेट अस डिस्कस फर्स्ट दिस. Okay, ठीक sir. है क्योंकि नहीं तो अटके रहेंगे इसी में. ठीक है. ओके. नाउ आई हैव टॉट यू अबाउट आरएसी सिस्टम. उससे पहले हमने एसी भी एयर कंप्रेसर भी किया राइट. Yes, sir. क्या डिफरेंस है? Equalizing valve. एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग एंड इंटरनल Okay. इक्विलाइजिंग. अच्छा मतलब एयर कंप्रेसर में इंटरनल इक्वलाइजिंग है. सर एयर कंप्रेसर. एयर कंप्रेसर लिखा है ना. ओके ओके सॉरी. So for is Sir, इसमें ओके. flywheel. आई विल राइट इट डाउन. अच्छा ठीक है. सो एयर आरएसी Dealing कंप्रेसर with में से इंजन कैन आई बाहर से से इट इज अ रहता dealing है. with वेट. हाँ आरएसी इज अ क्लोज सर्किट. यस सर. Refrigerant is not going out now, but यहाँ पे it is an open circuit. Air is getting utilized Yes, sir. to यस start सर. engine and all those things. Then we compressing the have refrigerant. wait. So we have LP cutout over here. Do I have any low pressure cutout? नो सर. No, sir. Here we have differential pressure lube oil low pressure cutout. Here we have lube oil low pressure cutout. Difference है दोनों में right? Then RAC is your single stage compressors. This is multi-stage, isn't it? यस सर. यस सर. Then It's वी LP नीड compressor and इंटरकूलर एंड आफ्टर कूलर इन इज एयर कंप्रेसर. yes, you have a crankcase heater
You know why it is provided, right? You can give many, okay? I'm just writing few. Okay. And here you have no crankcase heater. It's a Then belt driven. no flywheel. Even compressors can be belt driven, huh? बताया था ना? Air compressors can also be belt driven, okay? Yes, emergency Flywheel. generator, Yeah. emergency air compressor. Emergency air compressors are belt driven, right? Sir, but RAC डायरेक्टली is कपल भी again. हो सकते हैं। सी, अगर आपको नई साइकिल में हवा भराने तो छोटे होते गए होंगे आप लोग, ठीक है? Yes. यू हैव सीन देयर कंप्रेसर्स, ओके? दोज आर बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर्स, सो वी कैन नॉट Well driven. डिफरेंशिएट इन दैट पार्ट, ओके? Sir, फ्लाईव्हील। Yes. sir, but RAC it was always belt driven. It's not a gate driven. आरएस इट इज बेल्ट ड्रिवन, ओके? बताऊंगा उसका पर्पस भी बताऊंगा, ठीक है? व्हाई इट इज बेल्ट ड्रिवन। वो सेफ्टी में लिखाया था आपने। एक पर्पस है वो, दैट बेल्ट कैन स्लिप, बट देयर इज मच important purpose. It is to match your capacity of your compressor with your refrigeration plant, okay? So I will come to that later on, ठीक है? So you can write many more, ठीक है? Different type of unloader. Here it is different unloader, okay? And here the operation of unloader is different. Sir, in air compressor, each unit have individual connections for lubrication, oil lubrication, but RSC doesn't have. हाँ, सो ये सब आप अपने आप से भी ले सकते हो जितने आपको डिफरेंस दिखते हैं, ठीक है? सम ऑफ द डिफरेंसेस आर गिवन यू, ठीक है? यू कैन गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है? यू डोंट हैव एनी इंटरकूलर, आफ्टर कूलर जो भी है, ठीक है? सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है? So So screenshot some of the लेना. differences are given here. Yes, sir. All right. Let us discuss regarding your oil separator. सर वो लास्ट पार्ट एक बार बताइए. What? लास्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट. हाँ सर. दोनों का ओके ओके. अनलोडेड अनलोडर ऑप्शन, ऑपरेशन इज डिफरेंट, हाँ? ठीक है? यस अनलोडर सर. का ओके. ऑपरेशन, okay. Now you see here from the condenser or from the compressor, your refrigerant is coming, which might have some amount of, what do you say, oil in it, right? Oil carryover, Oil. it can happen, okay? So this will go down, okay? This mixture is going to go down. And since this mixture is in vapor state, it will move up, right? While moving up, it is going to pass through baffle plates. Baffle plates are perforated plates, ठीक है? लाइक योर वायर मैश देखे होंगे आपने, ठीक है? दीज आर परफोरेटेड प्लेट्स, मतलब होल्स रहते हैं उसमें। परफोरेटेड का मतलब क्या रहता है? दीज आर होल्स प्रेजेंट, ओके? सो दीज व्हेन दिस vapors are going to hit on this perforated plates and it is moving up, whatever oil will be there, that will be condensing, that will be sticking to this surfaces of these plates, and then oil will obviously, gravity अपना काम दिखाएगी, it will fall down, okay, and it will accumulate at the bottom. All right, and your vapors refrigerant will go to your condenser. Okay, now I have a float valve over here. Once the sufficient amount of what do you say, your oil has been collected over here, it will open the valve and it will send it back to the compressor suction. You can see in the diagram also. From here, it will send it back to your compressor suction, compressor crankcase. Okay. इसके बीच में भी normally there is one valve. Okay, one valve is there in between. Is it clear? Construction is clear to everyone. Sometimes in returns they are asking to draw it. Okay. You can read it here also. To return the trend in the gas to the compressor section. Okay, you can take a screenshot of it. What I've explained, that is what it is. Okay.
Is it clear? Yes, sir. Sometimes if you don't have this float type of wall, you can have an electric solenoid valve also present over here. Sometimes, normally आजकल maximum you have electrical solenoid valves which will open according to the timer, okay, and it will release whatever oil will be there at the bottom. It might be written also. Yes, here see electric solenoid controlled with a timer. Yes, okay. Sometime mostly nowadays we are using this electronic solenoid operated timer, okay, which will release the oil. But previously we were using float type, okay. So once the sufficient level of your oil has been collected over here, the float valve will open the valve and it will get released back into the compressor crankcase. Is it clear? Hmm. Yes, sir. Okay. So now tell me what is short cycling? This The term is a frequently Frequent cutting cutting and cut cutting off. off a compressor. Frequent cutting. yes. So so this term will be utilized by the surveyors and they will ask you what is short cycling, what do you understand by it? Okay. So it is frequent cutting in, cutting off of your compressor. Gautam, please turn off your mic. Now what could be the reasons? Less amount of refrigerant in the system. Yes. So one could be differential between cut-in pressure and cut-out pressure is very small. Okay. Suppose आपने cut-in or you can say not pressure, temperature, cut-in temperature. Thermostat may you have kept -16 as cut-in, -17 as cut-off. So it will, understand? It will start and stop Yes, your sir. compressor immediately. Yeah. So Yes, sir. differential is very small. Okay. If solenoid valve leaks, सर सर इसमें डाउट है yes, सर एज यू सेड -16 और -17 पे वो हो जाएगा कट इन कट आउट yes. राइट सो पर लेकिन दूसरे रूम का भी तो टेम्परेचर रीच होना हाँ चाहिए तो ना बाकी रूम्स का भी सबके लिए मैं एक साथ ही बोल रहा हूँ, ठीक है. अच्छा Maybe all rooms has cut in cut off pressure. एक one of the reason it could be, ठीक है. Differential ओके between the cut in and cut out temperature is very low. Okay. सर अगर तीनों Also रूम का you can टेम्परेचर write it in terms of cut in and cut in pressure. Okay. प्रेशर के ऊपर भी बोल सकते हो. जो आउटलेट प्रेशर आ रहा है ना, वेयर एलपी कटआउट इज सिचुएटेड ओवर हियर, सो दैट इज Yes, sir. मेंटेनिंग द प्रेशर. वो प्रेशर पे देख रहा है, ठीक है. सो इट विल कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. जैसा Yes, sir. But if room temperature has not been maintained, then it will again cut in. Yes, sir. ठीक है. So it can be on pressure and this thing also. ठीक है. सर अगर तीनों रूम का डिजायर्ड टेम्परेचर रीच हो गया है तो कंप्रेसर ऑफ हो सकता है ना कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा. बट अगर ओह आपने टेम्परेचर जो है आपने काफी कम रखा हुआ है सेटिंग, then it will again start ना immediately after few यस सर यस 1 or 2 minutes, right? ओके सर
So if solenoid valve leaks, now if solenoid valve leaks, how it is happening? Let me just put the diagram over here. These diagrams are okay to with you, right? कि नेट से निकाल के देने हैं डायग्राम्स, चलेगा ये सब? नहीं नहीं सर, परफेक्ट है सर। नहीं सर, आपका डायग्राम अच्छा है। ठीक. So now if my solenoid valve leaks, so suppose my temperature has been maintained. Okay, so when temperature is maintaining, what will happen to the pressure? डिक्रीज। Pressure decreases because less amount of refrigerant is coming as soon as I'm approaching to my temperature region, right? That means the यस सर। pressure also keeps decreasing, and at 1.5 normally my इट cutout विल is कट ऑफ। cut off, right? It will cut off my compressor, isn't it? But if my solenoid valve is leaking, it will again send my refrigerant. Bolo? It यस will सर। again send the refrigerant into it. Again, the यस सर। pressure is going to increase and it will again cut in. Is it clear? या For फिर से बोल example, दीजिए सर लास्ट वाला। for example, cutout pressure I have kept at 1.5. Then I have kept cut-in pressure for the compressor to be set at 1.3. Okay, for example, that if pressure further drops down, it should start. Okay, I don't want it to go any time below 1 bar, isn't it? So I have given a cut-in pressure for 1.3. Okay, now if my solenoid valve is leaking, suppose, for example, and my suppose my room temperature has to be maintained at minus 18 degrees Celsius and I have approached to a temperature at minus 18. So what will happen to the amount of refrigerant flowing at this stage to my TEV? कितना आएगा? इट विल बी Very लेस। less. लेस। Very वेरी less लेस। amount of refrigerant is flowing. So if यस सर। very less amount of refrigerant is flowing from here, that means here also pressure will be very less. यस सर। So what will happen? LP एलपी cutout. कट ऑफ विल बी। यस सर। ठीक है. I'm excluding this part. एक से समझो पहले. ठीक है. यहाँ को हटा दो. ठीक है. बिकॉज सपोज सबसे पहले आपका वेज रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है ऑलरेडी, वी कट ऑफ. आफ्टर दैट मीट रूम का हो जाएगा. लास्ट विल बी अ फिश रूम, राइट? यस सर। ठीक है. सो आई एम कंसिडरिंग ओनली वन एट दिस फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस. सपोज द प्रेशर हैज ड्रॉप, इट विल कट ऑफ. बट इफ योर solenoid valve is leaking, will my thermostat will be able to close it? नो सर, रेफ्रिजरेंट नो फ्लो बंद सर। ही नहीं होगा। Correct. Refrigerant will still flow. Again pressure is going to be abhi minus 18 degrees Celsius already is maintained. So I will not be using this much. मेरा pressure drop नहीं होगा ना. It is not going to change the state to that extent, isn't it? And the pressure will again build up. And again cut in pressure, it will start as soon as your pressure is coming, it will again start my compressor. LP cutout is auto reset. It will again start. Okay. Once it will sense again my refrigerant is coming back, it will again give a signal to cut in my compressor. कंप्रेसर। Okay. So this is how the solenoid valve leaks will, give rise to short cycling. Okay. If the solenoid valve is leaking or if the solenoid valve is not closing, all those things. Okay. But leaking will be much better. Okay. Then filter dryer is choke. Suppose if my filter dryer is choke, then same funda, less amount of refrigerant will be flowing. See, if filter dryer is choke, so less amount of refrigerant will be going over here, right? Bolo? Yes, sir. Yes, sir. यस Less सर। amount of refrigerant is going over. Now less amount of refrigerant will be going over here. I want to maintain my room at minus 18 degrees Celsius, but less amount of refrigerant is going. So यहाँ पे pressure कितना रहेगा? लो रह जाएगा, कम कट रहेगा आउट सर। हो जाएगा। Pressure will be less. When pressure will be less, it will cut off. But my room temperature has not been maintained. Again, it will cut in. यस सर। Yes, sir. Okay. So then filter of TV will also be choked then also.
नॉर्मली फिल्टर ऑफ टीवी, उससे पहले ये फिल्टर ड्रायर में ही चोक होगा, ठीक है। टीवी फिल्टर इज, यू कैन से, ठीक है, वन पॉइंट इज दैट ऑल्सो, टीवी फिल्टर, बट दैट इज वेरी रेयर। रेयर, ओके, होना। देन लेस चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट, somebody said less charge of refrigerant into the system. So this is understood, अगर कम रेफ्रिजरेंट है तो ऑब्वियसली द प्रेशर विल बी लेस ना, कम ही जाएगा हर तीनों स्टेजेस में, isn't it? मीट रूम, फिश रूम एंड वेज रूम में, okay, and that will be outlet pressure will always obviously will be less, and it will cut off, but the room temperature has not been maintained, it will again cut in, isn't it? Yes, sir. Expansion valve is not properly adjusted. It is also rare because normally we are not adjusting it, okay, and it is not, बिना परमिशन के चीफ इंजीनियर के, nobody should touch that expansion valve also. Even chief engineers will not even touch them, they will just say to change it. That means superheat is not adjusted properly. Then leaky compressor valves. Then what is, ठीक है, काफी है, ठीक है। कंप्रेसर के वॉल्स अगर लीक कर रहे हैं, हाउ कैन लीड टू दिस थिंग? चलो सोच के बताओ। सर अगर If मैं कंप्रेसर वाल्व लीक कर रहे हैं देन प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा सर बराबर से। प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, एग्रीड, ओके। इफ प्रेशर इज नॉट देयर देन ऑब्वियसली टीवी के बाद भी प्रेशर ड्रॉप ही रहेगा काफी ज्यादा, यस सर। okay, and it will again, because and temperature will not be maintained, and it will cut Yes, off sir. because of low pressure, and cut in because of Low temperature pressure. maintained नहीं है, right? Temperature. यस Yes, sir. Okay, so this is short cycling, okay, this is LP cutout is auto reset, okay, frequent LP cutout को short cycling बोलते हैं, okay, cut in cutout, that means okay, you can also call it as frequent LP cutout or cut in is known as short cycle, ठीक है, is it clear? And LP cutout is auto reset. आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। HP cutout is manual reset. Manual. Because once the room temperature has been maintained, आपका compressor stop कर देगा automatically. Again आपका जब temperature बढ़ना शुरू होगा, again it will start. So it is auto reset, है ना? You're not going again and again to start your compressor, isn't it? बोलो। नो सर। Yes, sir. Okay. So now we'll discuss HP cutout. It is manual reset. Tell me the reasons. क्यों हो सकता है? Overcharge. Air in the system. Excellent. Air in the system. Air in system. If air will be there in the system, I told you the temperatures will be more, pressure Yes, will sir. be more, Yes, sir. है ना? And वो condense नहीं कर पाएगा उसमें. Condense भी नहीं होगा, तो temperature and pressure will be more, and if the temperature and pressures are more, pressure, mostly the pressure if more, then it will lead to high pressure cutout. Yes, sir. Agreed? Okay. Liquid आ गया system में सर उधर compressor में. Liquid returning back. Liquid Inappropriate charge of refrigerant. on top of compressor. Inappropriate charge of refrigerant, sir. Inappropriate का मतलब क्या है? Means the not of the required level, means जैसे R404 है तो ओवर चार्जिंग हो जाएगा सर। वो तो मैंने यहाँ पे भी लिखा ना, जो आप बोल रहे हो लेस चार्ज,
लेस चार्ज नहीं, अब यहाँ पे ओवर चार्जिंग का है, ठीक है। नहीं, दूसरा जिसे दूसरा रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दिया, जिसे R404A रिकमेंडेड है, तो कोई दूसरा चार्ज कर दिया तब पर भी तो होता है सर। नो, नॉर्मली आपके पास शिप में ऐसे 4-5 टाइप के रेफ्रिजरेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। मोस्टली मैक्स टू मैक्स 2 टाइप के रहेंगे, ठीक है। वन इज मेजर वन एंड वन इज स्मॉलर सम, जो स्प्लिट एसीज इफ दे आर देयर, दे विल बी यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ दिस थिंग, ओके। सो ये रीजन मत दो, he will catch you lot of things then, ठीक है। चार्ज, then can I say if less cooling water flow In in condenser. my condenser, so it will not drop down the temperature, na? Utna? प्रेशर बिल्डअप हो जाए। Okay, again pressure will build up, right? I can say faulty HP cutout, यस सर। वो तो LP में भी दे सकते हो आप, ठीक है। Faulty HP cutout, ये reason you can give in LP cutout also. Okay, now if there will be air, very important question now, एयर को कैसे निकालना है, ठीक है। उससे पहले वी विल सी वन मोर थिंग, व्हाई डू आई नीड अ कंप्रेसर? Excuse me, sir. यस, Sir, oil separator drain नहीं हो रहा है तो if that the valve or the drain mechanism is not working. it will keep filling up, the oil will go to your evaporator coils, it will, it is चोक द going to एवापोरेटर stick on कॉइल। the evaporator coils, heat transfer रुक जाएगा, right? Liquid will be returning back, HP cutout will still take place, ठीक है। Okay, sir. Okay, why do we need a compressor? To इंक्रीज increase the सैचुरेशन saturation pressure टेम्परेचर। and temperature, saturation Yeah, pressure and the temperature. main reason is to increase saturation temperature and saturation pressure. Ranjan, can you hear me? Ranjan, am I audible to you? Keshav, Chirag, Yes, sir. what is saturation pressure or what is saturation temperature? What is saturation temperature? Sir, saturation temperature. Uh, What is the saturation temperature for water? sir, uh, sir, 100 degrees Celsius. 100 1 degrees Celsius. Okay, yes, sir. good. Sir, So, saturation. Sir, 1 minute, sir. saturation Saturation temperature is that temperature at which the boiling. phase change will take place. Agreed? Yes, sir. Is If I talk about water, water का 100 degree है ना? After 100 degrees Celsius, it will change to vapors. vapor, sir. Okay, below it will be in liquid state. Liquid, yes, sir. So in normally saturation जब भी यूज किया जाता है, that is corresponding to the boiling point. But in refrigeration topic, we don't call boiling points and all, we call it as saturation temperature or saturation pressure, at which saturation pressure वो होगा जिस at the pressure at which the temperature it will be saturating. Okay, 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 so sir. now I told you like your liquid refrigerant, obviously, just give me a minute guys, I'll drink some water and come up. ओके सर। पेपे, प्रभांशु, हाँ हाँ हाँ। भाई तेरे पास वो है क्या, फंक्शन 4B का और फंक्शन 3 का स्टडी मटेरियल, कुछ ऐसा शॉर्ट बुलेट पॉइंट जैसा टॉपिक जिसमें रहता है? इसके ऐप में है क्वेश्चन आंसर। उसमें नहीं, तेरे पास कुछ है? तेरे पास जो किससे कोलकाता पढ़ता में है एमडी, तू? कोलकाता में एमडी का। किससे पढ़ता है तू? पढ़ता होगा ना फंक्शन 3 सेफ्टी के लिए और इसके हाँ लिए। हाँ हाँ। तो सेफ्टी क्लियर हो गया?
सेफ्टी हो गया। भाई थोड़ा भेज दे मेरे को। सेफ्टी का मेरे नोट से भेज दूंगा। भेज दे, सेफ्टी का भेज दे, फंक्शन 4B का भेज दो, इलेक्ट्रिकल का भेज दे भाई। इलेक्ट्रिकल का नहीं होगा, 4B का होगा, सेफ्टी का होगा। हाँ, तो भेज देना भाई भाई। हम लोग को भी भेज दो भाई, ठीक है, हम ग्रुप लोग पे भी डाल पढ़ रहे हैं। दूंगा। भाई हमें भी अब भेज दो। क्वेश्चन अकेले ग्रुप में डाल देना, फोर्थ ग्रुप का में भेज। डाल देना, एवरीवन विल टेक, ठीक है। जो यस सर। नोट्स है, आजकल बहुत सारे नोट्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नोट्स डाल देते हैं, ठीक है। यस सर। बट आई विल स्टिल प्रेफर, जिसके पास टाइम रहेगा अपने नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सो every refrigerant, okay, every refrigerant that you will be having on board, with that refrigerant there will be a chart given to you, okay. That chart is known as PT chart. In that PT chart there are two things given to you, that is temperature or and pressure. So at different temperature and pressure, what will be your saturated temperature point, what will be the saturated pressure point, okay. So suppose at 5 bar, the saturation temperature is, for example, 20 degrees Celsius. At 10 bar, it is 25 degrees Celsius. At 15 bar, is 35 degrees Celsius. For example, I'm giving you, okay, random values. Let me see if I have a PT chart with me. Okay, leave it. नहीं है, ठीक है। सो उसमें आपको दिया रहेगा अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर। नाउ कैन आई से, now I have cooling media which is naturally there on board the ship, that is my seawater or my fresh वाटर, water, फ्रेश हो, यस सर। okay. Normally the temperature is ranging about 30 to 30 35, to 30, यस सर। isn't it? Cooling water जो pressure temperature रहता है हमारा, वो normally इस range में रहता है। I want my liquid to, you know, condense। कंडेंसर में I have to condense it, okay। कंडेंसर का काम क्या है? तो कंडेंसेट वेपर्स आ रहा है, आफ्टर कंप्रेसर वेपर्स आ रहा है, यस सर। दिस इज माय कंप्रेसर। आफ्टर दिस कंप्रेशन it is vapors, यस सर। I want to change it into liquid, लिक्विड, okay। So liquid में कहाँ चेंज करता हूँ? कंडेंसर में। कंडेंसर, Now condenser में I have the cooling media as water, which is suppose for example 30 degrees Celsius temperature, okay, inlet। I want with this 30 degree Celsius of temperature, मेरा जो वेपर आ रहा है which is of right now 85 degree Celsius temperature can condense, यस सर। ठीक है। How I will make sure it will condense? That is why I am using a compressor, because पहले यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा था मेरा? Pressure was suppose 3 bar, which was coming to the crankcase, okay. And let us say the temperature was, for example, the temperature is let us say 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है एंड 3 बार प्रेशर आ रहा है इनटू माय क्रैंककेस। नाउ इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ माय रेफ्रिजरेंट, कैन आई इंक्रीज द सैचुरेशन टेम्परेचर आल्सो? यस सर। Okay, so you can see here as I am increasing the pressure, the saturated temperature is also increasing, यस सर। right? So I told you saturated temperature क्या होता है, एक तरीके से boiling point, isn't it? यस सर। So I have So sent PT chart. हाँ, okay, where in the message telegram कहाँ पे? ये मैसेज में। Okay, all right, so above this saturation point it will be superheat, above below this it will सब be कूल, subcool, that means it will be getting condensed, यस okay. सर। Now I have increased my pressure of my refrigerant to 20 bar, okay, and the saturation temperature has reached up to 85, 85 degrees Celsius. That means now I can give any medium which is for cooling which is less than 85, it will condense, यस सर। and I have plenty of seawater on board, यस सर। okay. So seawater will be able to condense this liquid refrigerant,
Is it clear? Oh, sorry, vapor refrigerant. Is it clear? The main purpose is to increase the saturation temperature and to increase the saturation pressure. Pressure. ठीक है? अभी आप सोचो, if I don't use it and I told you suppose 5 बार का था, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस था और 3 बार था. If I straight away give it at this rate to my condenser, so ये 5 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, will 30 डिग्री सेल्सियस of my water will able to condense it? No, sir. नहीं ना? No, That sir. is It why will. I have to increase my saturation temperature and saturation pressure of my refrigerant. Is it clear why I need a compressor? Yes, sir. Okay, वो बाकी चीजें different है. To flow the refrigerant and all flow के लिए I can use a pump also. Air pump लगा दूंगा. That will also, or or I can use a normal fan. Okay, जो आपको इसको flow कर देगा. But I want it to convert it into liquid. For that reason, I have to increase the saturation pressure and temperature, and that is why we have given a compressor. Is it clear? Yes, sir. Okay, these questions, I don't know class 4 में पूछते हैं कि नहीं, but specifically in class 2, they will ask you, what is the need of compressor? I can just use a fan, it will flow. Okay, but if सर you use मतलब a fan, it flows, it will not condense. Sir, also, less pressure means the work done will be less in the TEV, no, sir, while it expands. What? At the TEV, it will flash, no, sir, it will expand. If the pressure Yes. difference is less, you won't get that much work done. टीवी अभी कहाँ से आ गया आपका? I'm talking about compressor, ना? Yes, sir, yes, sir. That's why we are compressing, sir, to keep it at a higher pressure. Yes, at higher pressure, if I, now understand what I am trying to say. At higher pressure, if I keep it, then flashing up will be better, na? Yes, sir. More work done. Yes, sir. At the TV also, the flashing up will be better, right? That Yes, is what sir, you're correct, trying to sir. say, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So is it understood about the concept of why we need a compressor? सर मींस वो जैसे 5 डिग्री सेल्सियस आपने बोला कंप्रेसर के पहले, जब वो कंप्रेस होगा तो उसका सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, से दैट उसका 85 That's हो why गया, I तो अभी can 80 now, देखो saturation temperature क्या होता था, मैंने आपको कितनी बहुत बार बोला, that is boiling point kind of a thing, right? So बॉइलिंग now पॉइंट. the यस सर. saturation temperature has been increased to 85 degrees Celsius. इससे ऊपर it will go to superheat region. इससे नीचे it will यस go सर. to subcooling सब region. कूलिंग. That means any medium that I can use for cooling for this 85 degrees Celsius vapors, I will be able to convert it into liquid. इस टेम्परेचर से नीचे कोई भी कूलिंग मीडिया यूज करूंगा, I can able to convert these vapors into liquid. And I have plenty of seawater or my cooling, fresh water cooling if it is a LT system. So that I can use, right? मेरे को specially कोई coolant नहीं use करना पड़ेगा, isn't it? I don't have to use some special coolant to cool my condenser, right? Yes, sir. Sir, एक यस सर. statement लिखा हूँ मैं. Can I read it out? हाँ, भेज दो ऐसे. Okay. मतलब नहीं सर sir. ये 30 Okay. 35 degree of sea water will be easily subtracting this 85 degree Celsius of heat, no sir? Yes, So it yes, will be yes. easily convertible into liquid. Correct. Okay. Easily convertible into the liquid state, right? Now, for example, okay, let us come back to here and we'll discuss about air in the system. Excuse me, sir. Yes. Sir, what would be the location of crankcase lube oil pump? Inside the crankcase or outside the crankcase? Inside your own normally, ठीक है? Outside Okay, भी sir. रहता है. I have seen both systems, ठीक है? Inside air Okay, pump also I've seen, but mostly outside. okay, sir. A very old ship I have seen in that it was inside, but mostly rest of the vessel it was outside. Can I move forward, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Tell me Yes, sir. what will be the symptoms if air will be coming? कैसे पता चलेगा आपको air आ गया system में? शॉर्ट साइकिलिंग होगा, एचपी ट्रिप हो जाएगा. शॉर्ट साइकिलिंग भी होगा और एचपी ट्रिप भी होगा. हाँ सर. सर कंडेंसर में कंडेंसर का वो सब बबल आते हैं ना. रिलीफ
सर रिलीफ वाल्व उठ जाएगा, कंडेंसर का रिलीफ वाल्व। नहीं नहीं, इतना कम पे भी नहीं रखा रहता कि वो उठ जाएगा, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं है कंप्रेसर कि बहुत बहुत हवा नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत एयर, काफी ज्यादा एयर नहीं आ रहा है आपका सिस्टम पे, बट स्लाइटली ऑल्सो यू हैव टू मेक आउट ना। सो गिव, पहली बात तो प्रेशर गेज विल बी जंपिंग बिकॉज vapors of your ये the temperature for the liquid refrigerant when it is getting compressed will be less as compared to the temperature of air when it is getting compressed, ठीक है। when air will get compressed it will be having much higher temperature, okay। so आपके जो pressure gauges हैं that will be going up than normal, temperature ज्यादा दिखाएगा ना आपका, प्रेशर प्रेशर गेज लगा रहता है, यस टेम्परेचर गेज लगा रहता है एट योर ऑन योर कंप्रेसर्स, यस कंप्रेसर। okay। So it will यस be सर। showing you much more. You have normally a compound pressure gauge, okay। So I will tell you about compound pressure gauge also। So if you see over here, this is a pressure gauge for your, this is a compound pressure gauge, it will show you the यस सर। temperature and pressure, okay। You can see over here, यहाँ पे बार लिखा हुआ है, can you यस see, सर। okay। यस सर। This is bar, this is a compound pressure gauge, this is specifically a suction pressure gauge because यहाँ negative में value है, ठीक है। in discharge pressure gauge negative value will not be there, ठीक है। suction में आपका vacuum आने के chances रहते हैं ना, I have told you, suppose LP cutout is यस सर। not working functioning properly, there might be chances that your compressor might go to your vacuum state, यस यस सर। सर। okay। और यहाँ पे देखो this is bar, what is written over here, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर। degree Celsius, Refrigerant. right, degree Celsius। so you can see at different pressures you will be having different temperatures, agreed। भाई 3 Yes, sir. टेम्परेचर्स लिखे। that is for different refrigerant, हाँ। देखो यहाँ Refrigerant. पे रेफरेंस। ओके R410A, ओके R22, R134A, R404A, R407, ठीक है। we have different ओके normally समझ right now we are using 134A, ठीक है। रेफ्रिजरेटर। 404 भी यूज कर रहे हैं, 134 भी यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी, okay। R22 is not used nowadays, ठीक है। before we were using R22, R407 R22, सी। R22 is in your split aces जो घर पे लगे हैं आपके, यस वो सर। सर ठीक है। R32 होता है ना सर? तो प्रीवियसली आई एम टेलिंग यू, पहले था R22, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके। सो this is an ozone depletion substance, that's why it has been now not used, ठीक है, R22। so you have this bar and you have the degree Celsius, so that means a pressure gauge which is showing more than one value is known as a compound pressure gauge, यस सर। ठीक है। and if air comes into your system that means it will be showing much more temperature, यस सर। obviously यस सर। pressure will also be more but temperature will also be more, right, यस सर। than normal, okay। so if in your PT chart, okay, let us leave it, first thing is understood to everyone, your pressure gauges will be jumping, ठीक है, ज्यादा दिखाएगा। यस सर। then if you touch your condenser, condenser will be hot, सर सक्शन और दोनों डिस्चार्ज दोनों प्रेशर दोनों ही जंप जंप करेंगे ना। करेगा। ओके सर। high condenser temperature यस सर। or hot condenser, you normally feel it by your hand, if it is hot that means air is there in the system because air is not going to be condensed, okay, in the condenser air condense नहीं होगा, air का moisture condense हो जाएगा, but air does not even only have water content ना, nitrogen है, isn't it, air is having what all things air is having, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। okay। so your only moisture content, H2O content in the air is going to condense, okay, which will mix with your refrigerant, but rest of the air is not going to get condensed and it will keep your condenser hot, temperature garam rahega condenser mein, okay, the body, यस सर। and if the air has come that means the moisture has come, agreed। यस सर। so यस सर। frosting in, frosting कहाँ रिटर्न होती है, लाइन। रिटर्न लाइन। रिटर्न लाइन ओवर द कंप्रेसर सर सर नहीं आल्सो। सर, सर इधर भी होगा क्या, उधर टीवी के उधर
और रिफेस So और hold on. Frosting of TEV. Okay, return line. बोलो कैसे होगा यहाँ पे frosting? Moisture has come to your system. How frosting will take place on the return? Frosting तो पहले flashing up के time पे ही हो जाएगा on your TEV. यस सर, यस सर. Okay, and if वहाँ पे frosting हो गया during flashing So up, so the Sir, lab, suction side pressure will be low. suction side. Yes, Pressure will obviously, be low, no, if sir. frosting is happened over here, less amount of refrigerant will be able to refrigerant pass will be and going. Yes sir. pressure will be low. That is there. But the main thing is your frosting can happen here, isn't it? पहले भी बताया मैंने ये Yes sir. आपको. Yes sir. All right. Now also Sir, frosting, temperature the frosting dry filter of also. एक मिनट हाँ, temperature of room also will not be able to maintain. If frosting होगा तो temperature maintain होगा. नहीं सर, फिर टीवी फंक्शन नहीं कर पाएगा. Or you can say also call it as compressor will run longer time. Right? Yes If sir. air आ गया है system पे, don't you think the ampere of the motor will also increase? Because it has to compress more, give more force to your compressor. Piston पे उल्टा force भी लगेगा ना air का extra. यस. Okay, so you can write it और भी लिख सकते हैं points, but this much is enough for now. Okay, now if air has come to your system, आपको इंडिकेशन लग गया पता, your jumping is there, आपका condenser is remaining hot, okay, और temperature is not getting maintained, ठीक है. Then now next step is what? What will be your next step? आपका air लग गया, आपको पता air is coming into the system. What you have to do now? Purge. एयर को निकालना है सर. Yes, now you have to remove the air. यस सर. How to remove? नॉर्मली कभी कभार सर्वेयर ऐसे भी बोलते हैं कि तुम नॉर्मली बताओ कि कैसे पता लग जाएगा तुम्हें कि एयर आ गया सिस्टम पे. ओके, यू कैन ऑल्सो से सर pressure and temperatures, okay, will be more in my pressure gauges of the compound pressure gauges as compared to the previously what we have seen. ठीक है, जो normal आप rounds लेते हो ना, what you are checking in your reefer air compressors. Normally I don't think so you are checking all those things, but from next time onwards, whenever you go on board, every day just check normally कितना pressure और temperature रहता है. So with the time when you keep checking this, आपको वो याद रहेगा कि okay, around this much, my suction pressure is there or my discharge pressure. For example, my discharge pressure is 15 bar. So corresponding to that, how much temperature will be? How much it will be a temperature for R134A? It will be around somewhere around 58. 8 or something, right? Agreed? 58. Yes, sir. Huh? Okay. So if I am taking this black one as bar and temperature degree Celsius I am taking for example 134A. Okay. So it will be around 58 or something, isn't it? यस सर. Yes. Let us take 60. ठीक है. So आप every day you are checking कि 15 bar 60 degree Celsius is for discharge. Okay. And suddenly one day you are finding out कि your pressure is also more and temperature is also more. What does it mean? Air has come into the system. एयर. Understood? Is it clear? And Yes, sir. how to differentiate between the compound pressure gauges of suction and discharge? सेक्शन में सर नेगेटिव में होगा सर ये. Suction will also have a negative value. You can see -30 लिखा हुआ है और यहाँ पे -1 लिखा है, 1 bar. यस. Okay, so Yes, that sir. will be the suction pressure gauge. These questions are asked ना, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस में पूछते हैं ये सब आपसे, ठीक है. Like how will you differentiate between a suction pressure gauge and a discharge pressure gauge of a RAC system? So suction pressure gauge will also always be in negative also. Will show readings in negative also, vacuum also. Is it clear?
एंड आई विल सजेस्ट यू कि एक किसी भी एक रेफ्रिजरेंट का याद रखो, दैट इज 134A। ठीक है, वो इसका कलर भी पूछते हैं। पता नहीं किसी ने पूछा था मेरे से, द प्रीवियस बैच। ओके, दे आस्क्ड मी कि सर वो कलर पूछ रहा था मेरे से। ओके, सो कलर इज ग्रीन, इजंट इट? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट स्टूडेंट आस्क्ड मी, ठीक है, कि उनसे ये कलर पूछा गया था कि कलर क्या होता है प्रेशर गेज में, तो इट इज ग्रीन। इज इट क्लियर? यस सर। सो हाउ टू रिमूव द ए? हाँ सर, बट इसमें टेम्परेचर भी दिखेगा ना हमको गेज में? टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल बी सीन। ओके, कंपाउंड सर प्रेशर गेज। okay, हाँ बोलो। वो आप गेज का फोटो एक बार प्लीज और एक बार लाइए ना स्क्रीन पे। सो फॉर एग्जांपल अभी इसमें आपने बोला कि ग्रीन वाला 134A है, सो टेम्परेचर रीडिंग कहाँ पे देखेंगे सर इसका? ग्रीन वाले पोर्शन पे देखो ना, ये रहा ग्रीन, हाँ फिर, अकॉर्डिंग टू द और प्रेशर। प्रेशर? प्रेशर ये रहा ना ब्लैक में। अच्छा, मतलब दैट इज कॉमन फॉर ऑल, यस black one the pressure will be common. यस Okay, the यस temperature will be changing. यस। ठीक है, Okay, okay. प्रेशर तो कंप्रेशन के टाइम पे क्या है ना, कंप्रेशन पे कितना प्रेशर आ रहा है, बट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेशन विल बी चेंजिंग, है ना? Yes sir, yes, yes. टेक अ स्क्रीनशॉट एक्चुअली दिस। ठीक है, अपने पास रख लो थोड़ा। कंपाउंड प्रेशर गेज में सिर्फ यही पूछा जाता है, पहली बात तो होता क्या है, एंड दैट इज इफ इट इज शोइंग मोर देन वन वैल्यू। ओके, नॉर्मल प्रेशर गेज आपको क्या दिखा रहा है, आइदर इट इज शोइंग प्रेशर और द टेम्परेचर और टेम्परेचर। गेज इज showing you the temperature. But here more than one things are visible to you, that means pressure and temperature is visible to you in one gauge itself, and that is why it is known as compound pressure gauge. ठीक है, सर कलर उसका ही पूछा था सर, फिल्टर ड्रायर का पूछे थे। फिल्टर ड्रायर अभी मैंने किया नहीं ना स्टार्ट। हाँ नहीं, कलर बताया ना, इसलिए मैं पूछा, वो Yes क्वेश्चन सर, हम पूछा था मेरे किसी ने। मेरे बैच में ही था वो लड़का। मेरा जिस दिन ओरल था उसी दिन शायद अय्यर हाँ, सर थे, उन्होंने ही पूछा था रेफ्रिजरेंट का कंपाउंड गेज में कलर क्या होता है। कलर पूछा था ना। हाँ, सो जस्ट हाँ। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, R134A याद रखो, दिस इज यूज नाउ डेज ऑन बोर्ड, और उसका कलर ग्रीन है। ठीक है, दैट्स इट। सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर आर हेल लॉट ऑफ यू नो दिस थिंग, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, उसको क्या पता, यस सर। आपके शिप में जाके चेक नहीं करेगा वो कि व्हाट रेफ्रिजरेंट यू आर यूजिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, आई मेरे को याद है, आई हैव गिवन अ पेज आल्सो टू हिम, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम, रिगार्डिंग द कलर्स एंड ऑल। ओके, सो let us discuss how will you remove the air. Chalo. Tell me someone what you are going to do. किसी को तो पता होगा। Sir, may I? सर फर्स्टली, Sir, first we have to pump down the compressor. We have to Excellent. close this. First step is pump down. What is pump down? कलेक्टिंग ऑल द रेफ्रिजरेंट इन कंडेंसर एंड रिसीवर। सर रिसीवर में करते कंडेंस, डाउट है सर इसमें। नॉर्मली दोनों एक ही चीज रहता है ये, ठीक है, एक में कंपाइल रहता है नियर कंडेंसर। सो ये सो कलेक्टिंग सर उसका आउटलेट वॉल्व वाल्व बंद कर देते हैं। all refrigerant in condenser. Okay, so after condenser we have a valve. After this, it is going to filter dryer and to your solenoid valve and to your TEV and to evaporator and all. So if you have closed this, क्या होगा? So we have to close this and we have to run the system on the compressor. What will happen if you close it? LP Sir, cutout no, activity. no LP cut out. refrigerant. LP cut out हो जाएगा. Agreed? Yes sir. यस सर। Because no pressure will be going forward and LP cut out में आपका compressor will trip. Agreed? And whatever refrigerant will be there, it will be coming with your, you know, compressor and all, and it will be going to your condenser where it will be condensing out, isn't it? And it will get stored into your condenser. Sara refrigerant, almost. Yes, You agree? Yes sir. Okay. What will be the next step? So then will see this gauge and temperature gauge.
थर्मोमीटर होता है ना सर, वी विल हैव टू वेट अंटिल द सी इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम हो जाएंगे तब तक। Yes. After that, सर आफ्टर दैट सर वैक्यूम पंप जो होता है वो लगाएंगे, एंड देन वी हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग इन रिकवरी बॉटल। so what I have done is I have to use my diagram. So यहाँ पे एक valve बनाया हुआ है मैंने. I have to shut this valve. Once I will shut the valve, there will be no refrigerant flow. Agreed? And whatever refrigerant was there in the system, it will be coming back to the suction. Okay? And there will be a time when the pressure will sufficiently drop that LP cutout will take place. Till that time, your compressor has sent almost everything to your condenser. Agreed? Yes, sir. Okay. So condenser में क्या हो रहा है? It will condense. Agreed? ये रिसीवर रहने दो, ठीक है? नॉर्मली दोनों एक ही चीज रहता है, कंडेंसर एंड रिसीवर एक्ट्स सेम, ओके, एक ही यूनिट रहता है. सो इट विल कंडेंस एंड इट विल accumulate in the condenser itself. बोलो. Yes, sir. Okay. So your refrigerant has accumulated over here in the system. It is not there now. Okay. So first step is pump down. वॉल्व का Pump down नाम is क्या है? under. हाँ बोलो. ये जो वॉल्व था ना सर, ये उसके कंडेंसर के बाद वाला जो बंद किया था हमने, सर उसका नाम क्या है? कंडेंसर वॉल्व, आउटलेट. कंडेंसर आउट, Master solenoid something you will तो say. किंग वॉल भी that बोलते हैं ना हाँ उसको? सर, किंग वॉल भी उसको बोलते हैं। किंग वॉल्व भी बोलते हैं. यस. किंग वॉल्व। नॉर्मली नॉर्मली आप कंडेंसर आउटलेट बोल देते हो, ठीक है. किंग वॉल्व भी बोल देते हो कई बार. देन after that what will happen? LP cutout will happen. Right? And all refrigerant will collect into condenser. Is it clear till now? सबको समझ आया क्या बोला है? यस Anyone who सर। has any issue? बोलो guys. Yes, sir. I क्लियर have सर, बहुत 18 clear। guys in my class and मेरे को सिर्फ 2-3 लड़कों की आवाज आती है, ठीक है. I want you guys to speak up guys, ठीक है. Because see, until you speak up, आपका ना confidence नहीं बनेगा in, to speak in front of surveys and all, ठीक है. Try to speak up. Okay. Is it clear? Yes, sir. यहीं से कॉन्फिडेंस बनेगा सर्वे के सामने बोलने से, ठीक है. वहां पे मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइस जो 1 day बिफोर 2 days बिफोर दे कॉल मी टू टेक अ मॉक इंटरव्यू एंड ऑल, ओके, एंड दे आर अनेबल टू स्पीक. इवन इफ दे नो इट, दे आर अनेबल टू स्पीक. व्हाई दे आर अनेबल टू स्पीक? तो क्लास में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है. इट हैपेंस गाइस, मैं बोल रहा हूँ आप लोग, ठीक है. बोलना शुरू करो. ऑलराइट. नाउ द सेकंड स्टेप इज keep cooling water to condenser open. Okay, it is already open, but you will keep it open. So there will be a time when this is my inlet. Suppose this is at 30 degrees Celsius. This is outlet. When these two both in and out temperature will become equal, can I say all the refrigerant has been liquefied? Yes, sir. That means no heat transfer is taking place now at this moment. Yes, And the sir. temperature will be equal to the seawater temperature. जब तक हीट ट्रांसफर हो रहा है तब तक ये टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना, आउटलेट टेम्परेचर. But once the Yes, sir. heat transfer has finished, that means all the refrigerant has cooled down to the same temperature as your cooling water, and inlet and outlet temperature is same now. Can I say all of my refrigerant has been condensed? Yes, sir. Okay. So you have to wait for at least 15 to 20 minutes for this process. Okay.
सर ये जो कीप सेकंड स्टेप में क्या लिखा सर? कीप कीप कूलिंग वाटर टू कंडेंसर ओपन। कूलिंग वाटर। थोड़ा राइटिंग मेरा ऐसा ही है, बट चलो सीख जाओगे, आदत पड़ जाएगा। कीप वेट फॉर 15 to 20 minutes एंड अलाउ cooling water to match the refrigerant temperature to match the cooling water temperature. क्वेश्चन, हाउ विल यू come to know that all of the refrigerant has condensate? बोलो। साइड ग्लास में देखेंगे, कंडेंसर में साइड ग्लास रहता है जो। When Sir, inlet and outlet temperature cooling will be water same. inlet and outlet आउटलेट Will be same. temperature टेम्परेचर इक्वल हो जाए। becomes same। तो साइड ग्लास में तो आप देखोगे वहां तो रहेगा ही, बट सारा कैसे हो गया वो इसी से पता चलेगा। व्हेन बोथ द टेम्परेचर्स विल बी सेम, ओके, एंड व्हेन बोथ द टेम्परेचर्स विल बी सेम, आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर विल आल्सो बी 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। Yes, sir. नाउ व्हाट? Sir, सर फ्रॉम द रिलीफ वॉल एरिया, सर वेंट सर, वेंट जहाँ पे होता है ना सर, वी विल कनेक्ट वैक्यूम पंप ओवर देयर, and then from vacuum pump we will start and then collect it in recovery bottle. कैसे पता लगेगा कितना निकालना? uh, may I? हाँ बोलो। Sir, first we have to connect the hose pipe to the relief valve, and another end will be connect to the recovery bottle, and with the help of vacuum pump, first सर we will ठंडा remove लगेगा उधर। first we will remove the all air inside the hose, and after that, as the pressure has been pressure is been negative in the in the pressure gauge, we will open the relief valve. It will start taking the all the air, and as the all the air has been sucked out, the refrigerant will start to come out, and it will feel cool down. yes, cold That sir। time, yes, at that time we will close the relief valve. सभी गलत बोले। अरे पर अब उसके आपको we know the प्रेशर गेज, प्रेशर गेज पे टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। yes प्रेशर sir गेज देखो, ओके। नेक्स्ट स्टेप हाँ इज चेक योर प्रेशर गेज। If suppose for example I'm giving you one example, it is showing me 10 bar and 35 degree Celsius in my compound pressure gauge, okay, in my compound pressure gauge it is showing me 10 bar 35 degree Celsius. Now my condenser is also having subcooling, yes सर। है ना subcooling उसमें? हाँ सर 5 डिग्री का, हाँ। Okay, normally it is 5 degree Celsius subcooling is there, but you can check your respective manuals to check how much degree of subcooling is given into it, right? ओके सर। सबकूलिंग सब भूल गए, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट योर चार्ट्स एंड ऑल, आई हैव pH, टोल्ड यू अबाउट दिस सबकूलिंग, इजंट इट? yes sir। सुपरहीट इज इन इवेपोरेटर, ओके। यू कैन सी हियर एक्सपेंशन के टाइम पे सुपरहीट आ रहा है ना, एंड Yes, sir. सबकूलिंग इज इन कंडेंसर। Condenser. कंडेंसर, ओके। सो वो वाला पॉइंट नहीं भूलना है। But what is my actual temperature of my refrigerant? Sir, सर इस टाइम पे 35 डिग्री सेल्सियस, 35 degree 20 bar. 20 बार। अभी कितना है मेरा एक्चुअल टेम्परेचर? 30 30 degree. 30। सी वाटर टेम्परेचर जो होगा 30 हाँ तो 30 हाँ, होगा। बट व्हाट इट इज शोइंग मी 35 35. प्रेशर गेज में, 10 व्हाई bar. इट इज शोइंग मी 35? बिकॉज ऑफ एयर इज Because of ऑल्सो air. देयर। बिकॉज ऑफ एयर, राइट? यस सर। नाउ व्हाट यू डू, यू ओपन द पीटी चार्ट।
पीटी चार्ट खोलो, पीटी चार्ट भेजा नहीं यार आपने? सर भेज दिया मैंने आया क्यों नहीं तो? सर, सेंड भी हो गया दोबारा आपको। भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दोबारा दिया भेज सर, दो। टेलीग्राम पे भेज। पीटी चार्ट, ओके। पीटी चार्ट इज सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर के एक ग्राफ रहता है फॉर द रेफ्रिजरेटर, ओके। हियर इट विल बी गिवन फॉर 5 बार हाउ मच टेम्परेचर विल बी देयर, लेट अस से 5 bar, 10 bar, or I can say 5. Okay, let me open this one. 5, 10, 10. So here you can see the saturation pressure, saturation temperatures given, okay, in different regions दिया है ना सारा, कितने pressure पे कितना आपका temperature है, right? Can you see guys, everyone? At different temperatures, different pressure दिया हुआ है, यस सर। Yes, okay? sir. Yes, sir. So similarly, अभी इतना तो हम वहां नहीं बनाने वाले ना रिटर्न्स एंड रूल्स में, जस्ट से that different at different pressures, different temperatures will be given. Suppose 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar, 10 bar. Okay. So I know, for example, I will give temperatures also. 20, 25, 30, or 25, 30, 35. So I will check PT chart में what is the corresponding temperature of my refrigerant. ये refrigerant का temperature 30 था, isn't it? Agreed? मैं refrigerant temperature, cooling water का temperature का inlet outlet रहेगा. Cooling water में यहाँ पे thermometers लगे रहते हैं inlet and outlet में. यस सर। Okay. So same way you will understand that my temperature of refrigerant will be 30 at this time, isn't it? PT chart में उसके corresponding pressure देखो. How much pressure it is given? 8 बार। 8 bar. But how much my pressure gauge is showing? 10 बार। 10 bar. So now when you will connect or you want to vent your system, आप कितना system vent करोगे until this 10 bar becomes 8 bar. Is it clear? यस सर। ठीक है? Is everyone understood क्या करने वाला हूं अभी मैं? कहाँ से मैं? ठीक है? हाँ सर। See, I have to have certain idea कि मेरे को कितना vent करना है. Isn't it? जब मैं vent करूंगा, when I'm going to vent, suppose this is my liquid refrigerant, यहाँ पे मेरा vapors air का रह गया है. So when I'm going to vent, this pressure will keep dropping in my pressure gauge. यस सर। I need to know कितने पे at what point I should stop, right? यस सर। And that is taken by from PT chart. Is it पीटी clear? चार्ट। तो Yes, sir. बेसिकली हम लोग सब कूलिंग को माइनस करके उसके करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर प्रेशर है वहां तक ले आएंगे, राइट? Yes. ठीक है? ओके सर। So simple फंडा आपको समझ आया what it is about? यस सर। And Okay. sir, from where we will, I mean, come to know that 8 bar has been achieved from compound gauge or from where? Pressure has compound pressure gauge ना? Okay. देखो आपने सिस्टम को इस you have closed the system from here, right? But this system is still open, right? I can see the pressure from the pressure gauge, Yes, sir. यस सर। isn't it? So same pressure रहेगा ना हर जगह लाइन में. यस सर। Yes, sir. So the basic funda is you should know when to stop. You will stop at 8 bar when the pressure will, because as soon as you will keep venting, the pressure inside your condenser will keep dropping, right? यस सर। And once the compound pressure gauge will show you 8 bar, then you have to stop. Okay. All right. Now what you will do? Straight away we are not going to. सर एक डाउट था सर, कंपाउंड प्रेशर गेज के अलावा जो जो डिस्चार्ज प्रेशर गेज रहेगा उसमें भी तो सेम वैल्यू दिखाएगा? हाँ तो डिस्चार्ज प्रेशर गेज इज ऑल्सो कंपाउंड प्रेशर गेज ओनली ना. अच्छा सक्शन ठीक की है, बात ओके थोड़ी कर रहा हूँ मैं. ओके दोनों ओके प्रेशर ठीक। गेज आर your compound pressure gauge, suction and discharge. ओके Only सर। the difference is suction will have a negative value. You have to see the discharge pressure gauge here. Okay. ओके ओके यस सर। 10 बार डिस्चार्ज में ही आएगा ना, सक्शन में तो नहीं आएगा. हाँ सर, ओके ओके सॉरी। Okay. So Yes, this is your condenser. Okay. This is your liquid refrigerant.
and you have certain air here which is not condensed, okay, that you want to vent out. So straight away I cannot just open the vent and you know release it in the atmosphere. It might have certain vapors of refrigerant also. So what you need to do is you have to connect it to a vacuum pump. Okay, a vacuum pump will be connected because हमको क्या चाहिए कि air should not enter back into it. Okay, and then from vacuum pump I will connect this to recovery bottle. पहले क्या करूंगा, this suppose this A, this is B. I will keep the both A and B in closed position. First, I will create vacuum. So I will release every air from this system. I will close the A, I will open B, okay? And I will use the vacuum pump to suck any air inside this pipeline. Agreed? Yes, sir. Okay, and it will be sent to Recovery bottle. Okay, after that, what I will do is I will start opening this vent valve very slightly. So what will happen? This air will be sucked. Agreed? Yes, sir. Air will be sucked and it will be sending it to recovery bottle. And you have to keep an eye on the pressure gauge. Yes, sir. Okay. So before it was showing 10 bar. So this is 8. So this pressure will be dropping now. Yes, sir. As soon as you reach 8 bar, you have to stop. Close the A valve. Then what you have to do? Now A is closed, B is open still. Okay. You will again use the vacuum pump and you will again suck any air into this line because it might have a little bit of refrigerant also, and you have to put it on the recovery bottle. After that, you can close the B valve, A valve. Okay. Once the recovery bottle, maybe you have pressure gauges. Okay. Wait, hold on. I'll show you. Yes. I'll just add it over here. This question is very important, guys. Huh? Okay. Okay. All right. So you can see I also have pressure gauges over here, right? Yes, sir. Okay, and I have a vacuum pump. Okay, this is connected to recovery bottle. All right. Is it clear? Yes, sir. ये एक्चुअली किसी और चीज का फोटोग्राफ है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैसा रहता है वो आपका, ठीक है? ब्लॉक, द ब्लॉक विल बी हैविंग अ प्रेशर गेजेस. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेन, आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए दैट नो एयर और रेफ्रिजरेंट लीक्स इनटू द एटमॉस्फेयर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so will you be able to tell how to remove air in the system? And it will not be released in one time. You have to do it multiple times. एक बार में सारा air नहीं जाएगा. Even if you come to 8 bar pressure, it will not release all the air in the system. Maybe slightly some amount of will still be remaining. Again, you have to do this process for at least 3 to 4 times to remove all the air. Is it clear? 3-4 टाइम मतलब लास्ट वाला ये स्टेप सर, मतलब फिर से वैक्यूम पंप लगा के फिर से ऐसे. Once 8 bar has come, right, you will close the valve number A. ठीक है? हाँ जी. Valve number A is closed. Right now in the pressure gauge, I will be getting some pressure because in the line I will be having some pressure. Yes, sir. I don't want to now remove this pipe. Pipe को नहीं निकालूंगा ऐसे में. I have to create vacuum here. So in this pressure gauge, until it shows vacuum, okay, until that time I will not, you can see here in this pressure gauge, if it shows vacuum, आपको मैं ये दोबारा चलाना पड़ेगा वैक्यूम पंप.
then when it will show vacuum, that means यहाँ पे valve आपने बंद कर दिया है. This is showing vacuum, that means all the air has been released Yes, sir. to the air bottle, recovery Yes, bottle, sir. isn't it? Yes, Only sir. that time you will close the valve. Okay, sorry, only that time you will remove the pipe. Okay, this pipeline then you can remove after doing that. Okay, sir. Okay, समझ गया. is it clear? Excuse, sir. Yes, sir. बोलो. Sir, from the point in the condenser from where we are taking suction, that time the air will be served, right? But Correct. the all the refrigerant would be in the liquid form. Then Correct. that time how the liquid will be served, move upward and नहीं, it will flow. liquid नहीं बोला मैंने, liquid नहीं बोला. There might be chances some vapors of refrigerant are still present. ठीक है? There might be chances. There's some amount of vapor refrigerant are still not condensed. There might be some chances, and that will also come along with it. Now that is why I do not want it to get released into the atmosphere. Okay, if you don't say about vacuum pump, then surveyor might not accept your answers. Okay, नॉर्मली हम ये सब यूज नहीं करेंगे शिप में, सीधा हम इसको रिकवरी बोतल में कनेक्ट करते हैं, इसको खोलते हैं, और जैसे ही प्रेशर एक बार आएगा बंद करेंगे, निकाल देंगे. देयर वी आर नॉट केयरिंग मच अबाउट कि थोड़ा सा लीक हो गया. But when you're going to tell it in front of surveyor, he will catch you here, right? This is your Yes, actual practice, that you have to use vacuum pump. You have to create vacuum in the pipelines before disconnecting these pipelines. Is it clear? yes, sir. सर Yes, sir. कनेक्ट करने के बाद भी आपने बोला कि पहले एक को बंद रखेंगे, कोई लाइन में प्रेशर Okay, होगा तो उसको भी, तो उस टाइम भी क्या? I will repeat again. I will repeat again. ठीक है? नहीं सर, वो समझ गया, मतलब स्टार्टिंग टाइम No, में no. भी क्या हम वैक्यूम Still, क्रिएट I'm करके फिर going to repeat वापस? again. I'm going to completely repeat again. ध्यान से सुनना सब. ठीक है? There is one pressure gauge over here. Okay? There is one pressure gauge over here. Okay? Now I have this to this vent valve. I have connected this hose A. Okay, and from vacuum pump to my Yes, sir. recovery bottle, I have connected hose B. B. Okay, now this hose might have air inside it. Yes, sir. Agreed? Right Yes, now, sir. my both the valves are shut. Huh? Both valves are shut. What I will do? I will start the vacuum pump. It will and I will open the B valve. So it will create vacuum in this line. Hose number A में vacuum create होगा. You can see in the pressure gauge. It will show negative Okay. value. Okay, and it will be throwing it into your recovery bottle. Mm-hmm. Agreed? You can see the Yes, pressure sir. यहाँ पे बढ़ेगा. Okay, when it will be हाँ throwing it सर. away. Now once the vacuum has been generated, now you open number A valve, vent valve. Slightly crack Okay, open sir. करना, crack open करना. Now what will happen? The air will go from here, right? Starts And it to. will go from here, and it will Yes, sir. enter into your recovery bottle, right? Once the pressure reaches to 8 bar, you will close the valve, A valve, isn't it? Yes, sir. But still some amount of air and or might be mixed with refrigerant is present in these lines. Yes, Yes, sir. sir. I do not want to just now close A and B and just remove the lines. No. What I have to do is keep B open and start the vacuum pump again. It will until it show vacuum. जब vacuum show करेगा, that means there is no more air into the lines, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. It has already pumped everything here. Now I will close number B valve. And now I can disconnect these pipelines. Hose number A and B, I can disconnect. That is it. Okay. But removing air in one go is not possible. So you have to do this multiple times. Is it clear? Yes, sir. So this question is asked a lot of times in the orals, in the writtens. Okay. How air, you are going to remove. So is it understood? पहली बात तो एयर पता कैसे चलेगी, हाउ, एंड आई हैव टू स्टिल डिस्कस हाउ इट इज कमिंग, राइट? एयर आता कैसे है? सो हाउ द एयर कैन कम इन? Yes, Sir, sir. at the Loop time can in of the valves. at the time of charging refrigerant, at the time of charging lubricant, lube oil, sorry. Or if the LP pressure cutout is not properly set, then air also can come. So lube oil charging
time if it's not done properly by using vacuum pumps and all. Okay, if lubal charging procedures is not followed properly, can I write it like that? Yes, sir. Tomorrow we will be doing all this lubal charging and refrigerant charging and all. Okay, then वो लिखा दीजिए ना वो During charging of, refrigerant yes sir. charging procedure is not followed properly or according to procedure. Okay, सर LP कट आउट सर अगर नहीं सही है। During yes, maintenance of during compressor, overhauling of compressor, or you can say maintenance on the compressor, LP cutout malfunctioning, that means compressor running under vacuum, right? Yes, sir. So under all these conditions, my air can enter into the system, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What are the symptoms? Now you know. Okay. yes sir. These are the symptoms. Yes, sir. Then how to remove it, you know. So this question is understood. Very important question. Huh? Okay. Yes, sir. Okay. So we'll सर एक stop here. क्वेश्चन था सर। हाँ सर ये वैक्यूम हम निकाल रहे हैं तो इसको एयर बॉटल में क्यों कलेक्ट कर रहे हैं सर? ये तो उसको पर्ज आउट भी तो कर सकते हैं। कोई सेफ्टी purge out क्यों रीजन है क्या इसके करोगे? पीछे? It is not allowed to purge out refrigerant. I told you air might have some refrigerant into it. तो मींस ये सेफ्टी पॉइंट It ऑफ व्यू is से इसको सेफ्टी की कोड मार्कोल पड़ जाएगा पीछे Marco आपके, and X6 कोल्ड बर्न ठीक है? वगैरह ये सब ना हो इसलिए सर। It is not allowed as per मार्कोल. Okay, very ओके सर। information. It is not allowed to सर release ये your refrigerant. Okay. सर ये ओडीएस ओके रिकॉर्ड सर। बुक में करेंगे क्या हम लोग इसको रजिस्टर, मतलब रिकॉर्ड करेंगे क्या इसको?